Hi guys, my name is Soham and I am in third year of engineering in electronics and telecommunication at SPIT College Mumbai. So in this playlist we'll be learning class 10th science. We'll cover all the chapters in this playlist. So today let's begin with our first chapter, that is chemical reactions and equations. So firstly, yeah, you may have noticed certain chemical reactions in general in your surroundings as well. Maybe for example, milk that is left at room temperature. So तुमने देखा होगा कि दूध फट जाता है. So दूध फटना is something that is happening chemically. Like तुम गरम कर रहे हो, chemical reaction हो रहा है. तुम सिर्फ कुछ अलग कर रहे हो, then it is a chemical reaction, right? Basically milk, तुमने milk को बार बार गर्म करना पड़ता है समर्स में, तो स्पेशली ज्यादा, क्योंकि दूध फटने के चांसेस होते हैं. सो व्हाट हैपेंस व्हेन जब दूध फटता है, पनीर बनता है, राइट? सो यू नोटिस दैट मिल्क था पहले, लिक्विड था, उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, उसके बाद वो पनीर में कन्वर्ट हुआ. पनीर की प्रॉपर्टीज अलग है, उसका टेक्सचर अलग है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है. Next, also we have an example of iron tawa, pan, nail, anything that is made up of iron. When it is exposed to humid atmosphere, some थोड़ा वो खराब हो जाता है. In general, we say that उस पे जंग लग गया हुआ है, right? Then also जब खाना पकता है, तो खाना is not something that only happens like heating. वो अंदर chemically also उसमें कुछ ना कुछ changes होते रहते हैं, right? So these are all the chemical reactions that we usually see. We do not notice them as chemical reactions, but these are chemical reactions, and that they happen in nature, in our surroundings everywhere. So this is why we need to learn this chemical reactions and equations. ठीक है. So we are given with an example. Let's begin with a very easy example. Magnesium. Magnesium is an element. ठीक है. Okay. So magnesium का रिबन मिलता है. Okay. So जब तुम वो रिबन को गर्म करते हो ना, उसके जो ashes गिरते हैं, you can see that here the magnesium ribbon is held with a tong, and it it has been burned using a burner. So you see that some particles are fallen on this dish, right? These particles are not magnesium itself, they are magnesium oxide. So क्या हुआ? मेरा पहले तो मैग्नीशियम रिबन था, सिर्फ मैंने उसको गर्म करके उसके एशेस गिर गए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. ऐसा क्या हुआ? सो ये सब these are all chemical reactions. You can see that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder, right? अभी तुम बोलोगे white flame कैसे, right? Generally, जब if we burn something, the flame is mostly yellow or golden, but it has white flame because of the properties of magnesium. It is an element, it exhibits its own properties. And also after burning, now if we burn paper, we get black ashes, right? We get small particles of black ashes and black paper, right? But now we have burned magnesium, that is an element, we get a white powder. So this powder is called as magnesium oxide, right? अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो हुआ है, ये उसको जलाने से हुआ है. And जलाने के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन लगता है. वी नीड ऑक्सीजन टू बर्न, बिकॉज वी कैनॉट lit fire without using oxygen. So that is why the precipitate form is magnesium oxide. The product formed is magnesium oxide. Also, there is one more example that is given, that we have put some zinc granules in dilute sulfuric acid, and then we have just mixed it up. In this, the H2 gases evolved through the apparatus. This is apparatus basically. These all experiments will be done in your school, I assume. So yeah. So basically, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place or not. Change in state, change in color, evolution of gas, change in temperature. ठीक है? Let's take a basic example. Let's take a basic example of दूध का फटना. पहले दूध था, its state was liquid. ठीक है? उसका टेम्परेचर कैसा था? गरम था. It was hot because गरम दूध का ही पनीर बनता है, फटता है ना.
because when we heat up our milk, तभी वो फटता है अगर it has gone under some chemical reaction. Color in this case does not change, evaluation of gas is not present, but still we have change in shade and change in temperature, because when जब दूध फट के पनीर बनता है, पनीर is solid in nature, it is not liquid anymore, and also the temperature is not hot. गरम पनीर देखा है कभी? नहीं होता है ना. So yeah, this is what we need to learn. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We'll study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. Okay. So now next up we have chemical equations. Abhi every time I'll not say let's say example of magnesium and oxide, magnesium and oxygen and magnesium oxide. ठीक है. What we did was we burned magnesium in the presence of oxygen, and it got converted into magnesium oxide, right? So this description of a chemical reaction in a sentence form is quite long, right? I need to say when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. Very lengthy, right? So instead of that, we can write in a short form. That is, मैंने magnesium था, burn किया मतलब क्या किया? Oxygen के साथ उसको mix up किया. ये magnesium था, oxygen था, और उससे मुझे मिला magnesium oxide. इजी पीसी लेमन स्क्वीजी, राइट? ठीक है. अभी उसमें भी वी नीड टू सी दैट ओ ये सब टर्म्स क्या है कि एरो के पहले क्या है, एरो के बाद क्या है. सो बेसिकली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, दैट इज दिस साइड, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को वी कॉल्ड इट एज रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स आर समथिंग जिससे प्रोडक्ट बनता है. सो इफ आई सेम दूध का फटना, तो दूध मेरा रिएक्टेंट हुआ. एंड द equation that is written on the right side of the arrow, that is where the arrow is pointing towards, that is called as a product. So basically in दूध का फटना केस, मेरा दूध का फटना was reactant, कि वो उस रिएक्शन जिस पे हो रही है वो रिएक्टेंट होगा ना, राइट? तो जो जिस पे रिएक्शन होती है दैट इज द रिएक्टेंट, एंड माय पनीर वाज प्रोडक्ट. ओके, दूध पे तो रिएक्शन हो गया, अभी मुझे पनीर मिला, तो पनीर मेरा प्रोडक्ट था. In this case, magnesium and oxygen, they were reacting, they were involved in the reaction, उन पे reaction हो रहा था, that is why they were called as reactants. And then we got the white powder in the ashtray, that was magnesium oxide. So magnesium oxide was formed during the reaction of these reactants, so that is called as product. जिसके तरफ arrow point करता है, that is the product, and जहां से arrow point कर रहा है, that is reactant. और basically to the left hand side of the arrow we have reactants, and to the right hand side of the uh, arrow we have product. ठीक है. Here also we have written the same. Also हम reactant एक तो नहीं है, मैग्नीशियम के साथ मेरा ऑक्सीजन भी था, मे बी कुछ और भी हो सकता था, नॉट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम बट इन जनरल, magnesium plus oxygen. So we separate it using plus sign. So similarly in product side also, अगर मेरा magnesium oxide के साथ कोई gas evolve होता, in this particular case it doesn't happen, but कोई और example होता, एज इन यहाँ पे मेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक में मिला रहा हो, तो मुझे ZnSO4 मिल रहा है, वो आगे सीखते हैं. तो मुझे वो मिल रहा है, प्लस मुझे H2 गैस भी मिल रही है. सो जो H2 गैस मिल रही है, तो मैं उसको प्लस करके लिख सकता था. विल सी इट इन फर्दर. ठीक है. अभी मैंने लिख लिया, चलो मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. बाप रे. Again, this is also a very lengthy process to write. So therefore, to write a chemical equation, we use chemical formulas or symbols of these elements, right? Magnesium is written as Mg, oxygen is written as O2, magnesium oxide is written as MgO. So basically, we get the reaction that Mg plus O2 gives MgO, that is magnesium oxide. Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Okay, so this is how we write a chemical equation. So therefore, you need to learn the you need to learn the symbols and the chemical formulas of all the elements. At least for class 9th and 10th, I would recommend that, for class 10th, I would recommend that first 20 elements should be by hearted by all of you. You can find on YouTube. There are many mnemonics to learn them. I also had one mnemonic in my 10th standard. I just need to recall it. I'll make a separate video for that mnemonic, or in the next chapter. In
in the next chapter, in the beginning of that video, I'll just take a minute and tell you that mnemonic. ठीक है? Cool. Okay, so next up, we need to balance this chemical equation. Okay, तुमने वो तो पढ़ा होगा, law of conservation of mass. So basically, mass is something that cannot be neither it cannot be it cannot be created, neither be created nor be destroyed, right? मतलब मास जो है ना मैं वो बना सकता हूँ ना मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, वो सिर्फ मैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. एनर्जी इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट. एनर्जी इज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर. बेसिकली अगर मैं बॉल एक बॉल है मैंने उसको ऊपर से फेंका तो वो बॉल के पास इट हैड सम पोटेंशियल एनर्जी. दिस यू विल लर्न इन क्लास 11 जस्ट फॉर एन एग्जांपल. आई एम टेकिंग दिस. बॉल था मेरे पास, मैंने बॉल लिया, मैंने बॉल को फेंका नीचे. बॉल के पास जब वो रेस्ट पे था मेरे हाथ में था ऊपर, इट हैड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, mgh फॉर्मूला लगता है वो, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट. यू डू नॉट नीड टू गो देयर. मैग mgh मेरा पोटेंशियल एनर्जी पे था, मैंने बॉल को छोड़ा, वो नीचे-नीचे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, सो इट हैज़ गॉट सम काइनेटिक एनर्जी. सो मेरा पोटेंशियल एनर्जी वाज़ कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी, बट मैंने ना पोटेंशियल एनर्जी बनाई, ना मैंने काइनेटिक एनर्जी बनाई, ना मैंने उसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी को खत्म किया, ना मैंने काइनेटिक एनर्जी को खत्म किया. मैंने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है. सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स यू. So, अभी तुम then the question arises what? अभी in this it was mg. mg का एक ही एटम है, राइट? मॉलिक्यूल एक ही है ना? यू नो दैट व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स. तो अभी मेरा इधर एक ही एटम है, ठीक है, बट O2, O2 के अभी ऑक्सीजन दो एटम्स में ही एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन को इधर मेरे दो एटम है, ठीक है, चलो. अभी प्रोडक्ट देखा तो mg का एक एटम तो है, एक एटम तो है, बराबर है, बट ऑक्सीजन का एक ही है. दो था, एक कैसे हुआ? वन एक किधर तो चला गया ना, जो कहाँ चला गया वो सब में नहीं जाना है अपने को. वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. मुझे वो बैलेंस करना पड़ेगा कि क्यों हुआ अभी मुझे वो इक्वल करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई वी यूज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. ठीक है. सो अभी फॉर एग्जांपल विल टेक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. हमने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में देखा था, जिंक पहले सल्फ्यूरिक एसिड था, फिर जिंक था. जिंक को मैं सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने जिंक को डाला, तो आई गॉट zinc sulfate and hydrogen gas was evolved as a product. So zinc sulfate and hydrogen gas are my product, are my products. ठीक है, तो देखते हैं. देखो पहले जिंक था, जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Zn मतलब जिंक, H2SO4 is the formula for sulfuric acid, then ZnSO4 is the chemical formula for zinc sulfate, and H2 is hydrogen. ठीक है. अभी let us examine that the number of atoms of different elements on both sides of the arrow. ठीक है, जिंक में ओके, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. दो कॉलम्स बना लिए, LHS और RHS. ठीक है, वेरी गुड. जिंक में पहले इधर एक ही था, प्रोडक्ट में भी एक ही है, ठीक है. LHS में भी सेम है, RHS में भी सेम है, ठीक है. हाइड्रोजन में इधर पहले दो था, इधर भी दो है, ठीक है, चलो सेम है. सल्फर का मतलब एस का इधर भी एक था, इधर भी एक है, तो चलो ये भी सेम है. एंड ऑक्सीजन का इधर भी फोर है, इधर भी फोर है, तो ये भी सेम है. सो वी कैन से दैट एज द नंबर ऑफ atoms of every reactant of every element in the LHS and in the RHS, that is in the right left hand side and in the right hand side, that is in the reactants and the product side, is same, then the chemical equation is balanced. So therefore this equation is valid and it is balanced equation. We can say that it is balanced. ठीक है. But there are many cases where the equation is not balanced. Let us take an example of Fe plus H2O gives Fe3 plus Fe3O4 plus H2. We'll write it over here. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. ठीक है. Okay, now we'll make columns.
LHS, RHS और ये एलिमेंट Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। फर्स्ट केस Fe हियर एक एलिमेंट था, हियर थ्री एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन फर्स्टली इट वाज इन LHSI टू एटम्स, हियर आल्सो टू एटम्स। ऑक्सीजन पहले वन था, बाद में ऑक्सीजन हो गया फोर। ओ माय गॉड, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, अभी मुझे Fe का LHS में मुझे तीन एटम्स चाहिए, बिकॉज राइट हैंड साइड में तीन एटम्स है। अभी मैं राइट हैंड साइड में Fe के एटम्स कम नहीं कर सकता, बट मैं लेफ्ट हैंड साइड में Fe के एटम्स बढ़ा सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली राइट थ्री हियर। सो बेसिकली थ्री Fe मतलब थ्री एटम्स ऑफ Fe, इधर भी थ्री एटम्स ऑफ Fe। तो ये बाद में, हाँ, ये चेंजेस करने के बाद में क्या हो गया, if this is LHS and RHS, इधर भी थ्री, इधर भी थ्री, ठीक है। Fe बैलेंस्ड, ओके डन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का टू टू, सो हाइड्रोजन till now is untouched, and here one, here four, ठीक है। Now on my product side oxygen was four, and in the reactant side it was only one. So what I'll do is I'll simply write four in front of this H2O. So again मेरा क्या हो गया, मेरे ऑक्सीजन का भी मेरा फोर था, मेरा फोर हो गया। यहाँ पे फोर इंटू वन, यहाँ पे वन ही है ना ऑक्सीजन का, तो ये फोर इंटू वन वन ही होता है। यहाँ पे भी यू जस्ट रिमेम्बर कि यहाँ पे जो होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। बेसिकली थ्री इंटू वन मतलब थ्री ही है। सो आई हैव थ्री आइटम्स ऑफ Fe, या ऑल्सो वी हैव थ्री आइटम्स ऑफ Fe। Then here oxygen have, we had one atom, we multiplied it with four, so we had four atoms of oxygen. Here also we have four atoms of oxygen. But now there is a twist. अभी ऑक्सीजन और मेरा आयन तो बैलेंस हो गया, but what has what has happened is, as I multiplied this H2O with 4 ना, मेरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। मेरे हाइड्रोजन का क्या हुआ, LHS में मेरे हाइड्रोजन के एटम्स, माय बैड, एटम्स, एटम्स कितने हुए, फोर इंटू टू एट हो गया, बाप रे। और LH और एंड RHS में इट इज स्टिल टू। सो मुझे यहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा इधर अनबैलेंस हो गया ये, क्योंकि मैंने Fe आयन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अभी ठीक है, आयन और ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिया, अभी हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं सेम। अभी मेरा इधर हाइड्रोजन के कितने हैं एटम्स, फोर इंटू टू, यहाँ पे दो थे, मैंने फोर से मल्टीप्लाई किया, फोर इंटू टू एट। अभी मुझे यहाँ पे दो ही है, तो व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई इट विथ फोर अगेन। तो यहाँ पे भी मेरा फोर इंटू एट हो गया। So now I have eight atoms of hydrogen on left hand side, and I have eight atoms of hydrogen on right hand side. So basically again we will recheck. Fe के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थ्री आइटम्स है, राइट हैंड साइड में थ्री आइटम्स है, एटम्स है। देन हाइड्रोजन के फोर इंटू टू एट, LHS में एट है, RHS में भी फोर इंटू टू एट है, ठीक है। ऑक्सीजन के फोर इंटू वन फोर है, ओके। LHS में, RHS में भी फोर इंटू वन फोर, फोर ही है, राइट। So this is a balanced chemical equation. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. You can see it in your textbook. After balancing, we get the answer as, अरे किधर गया? हाँ, we get the balanced chemical equation as 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. You can read, you must go through the NCERT textbook twice to get all the definitions and all the things. Also, you'll be familiar with the chemical formulas of the elements. Okay. Also, in a equation, we need to write the physical states of the elements and the products that are formed. So basically, मेरा पहले iron was solid, H2O was in gaseous condition, S is solid, gas is G, and liquid is L. ठीक है, basic. Then in product side, I had Fe3O4 that was in solid state, and hydrogen gas was evolved. So hydrogen तो gas ही है, तो that was in the form of gas. ठीक है. Okay. Here you will say that कि H2O को gas कैसे बोला? क्योंकि मैंने उसको स्टीम फॉर्म में यूज किया था। मैंने जब वाटर को बॉईल करता हूँ, H2O when water is boiled, it gets converted into in the form of steam. So that is why we have written it as G. ठीक है.
हाइड्रोजन तो गैस ही रहेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आयन इज ऑल्सो सॉलिड, सो आयन इज सॉलिड. ठीक है. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. are also indicated using the example. So अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है CO+2H2 gives CH3OH. So basically यहाँ पे लिखा है 340 ATM. What is ATM? ATM denotes atmospheric pressure. तो मैंने reactants तो मेरे थे CO+2H2, बट उनको उनको कराने के लिए, उनको रिएक्ट कराने के लिए मैंने प्रेशर डाला है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो दैट इज व्हाट वी यूज. ओके, हियर आल्सो नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो यू हैव 6CO2 plus 12H2O plus 12H2O gives C6H12O6 6O2 plus 6H2O. Basically this is the process of that conversion of this is the photosynthesis process. Basically you have used carbon dioxide, you have used water, and you have formed glucose, plus oxygen is released and water is released. So basically photosynthesis में sunlight and chlorophyll is also used. So these are written on the top of the arrow, ऐसे लिखते हैं. So basically this is the total process. ठीक है. I hope this is clear. Okay, next up we need to learn what are chemical reactions. ठीक है. हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन होती है, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट यू नीड टू गो थ्रू. सो द फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन इटसेल्फ सेज दैट कि बेसिकली कुछ तो कंबाइन होके कुछ तो बन रहा है, राइट. केमिकल रिएक्शन इज ऑल दैट ओनली. बट हियर आई विल से दैट फॉर एग्जांपल इफ वी react calcium oxide and water, we get calcium hydroxide plus heat is generated. ठीक है. So अभी तुम देखो, here we have two reactants and a single product. Heat, you cannot say it as a product because heat is a byproduct, because heat is released ना. Heat is not something you can ऐसा आप पकड़ के बैठो. लिक्विड लाइन तुमको या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज समथिंग ऑफ यूज, बट हीट तो तुम्हारी सिर्फ जनरेट हुई है. हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट, बट इट इज स्टिल रिटन ऑन द साइड ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज इट इज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है. So when two or more reactants react together to form a single product, then this type of reaction is called as combination reaction. Here we can see that the calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. I hope this is clear. You must remember that calcium oxide is called as quicklime and calcium hydroxide is called as liquid lime. ठीक है, cool. I'll suggest you go through this fact once. Do you know? ठीक है. More examples are burning of coal. Basically, when we burn coal, carbon plus oxygen, it gives carbon dioxide. Carbon dioxide gas is released. ठीक है, that is the product formed. Two reactants, one product. Combination reaction. Next is formation of water from hydrogen and oxygen. अरे, basic reaction. जब hydrogen को और oxygen को मिलाते हैं, then we get H2O. This is not the balanced reaction. This is the balanced reaction. But yeah, this is also combination reaction because two or more reactants are reacting together to form a single product. Therefore, these types of reactions are called as combination reaction. Okay. You must also know that what are exothermic reaction. As you saw over here, heat was generated. Basically, heat was released. The reaction in which heat is released along with the formation of products, these types of reactions are called as are exothermic chemical reaction. Exo मतलब बाहर जा रहे हैं, exo. That is why heat is released. ठीक है. So burning of natural gas again also a type of chemical reaction. रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज रेस्पिरेशन क्या होता है, तुम्हारा जो ग्लूकोज है, तुम्हारे अंदर जो शुगर है, शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी तुम्हारी रिलीज हुई है, सो द रिलीज ऑफ एनर्जी इज अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज एनर्जी. ओके, cool. So next up, we have second type of reaction that is decomposition reaction. Oh, decomposition reaction. Okay, decomposition reaction is something in which one reactant decomposes into two or three products. One में तो नहीं होता है. One reactant, two or three products. Combination क्या था? Two reactants, one product. Here decomposition, we have one reactant, two or many products. ठीक है. So, for example, please read this out. Huh? I'll just refer the reactions. Okay. So when we heat ferrous sulfate,
it gets converted into ferric oxide plus sulfur dioxide and sulfur trioxide. बाप रे. So तुम देख रहे हो, मेरे I in the reactant side I had only ferrous sulfate. ठीक है. I what I have done is only I have heated it. यहाँ पे heat लिया ना, heat को we are also denoted as this triangle है delta, it is called as. So we have heated the ferrous sulfate and we have got ferric oxide plus sulfur dioxide and sulfur trioxide. So basically, this is a type of decomposition reaction where a single reactant is decomposed into two or more products. I hope this is clear. One more example is of decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating. ठीक है, calcium CaCO3 also known as limestone. When we heat calcium carbonate, we get quicklime, that is CaO, quicklime, and carbon dioxide is evolved in this equation. Okay. So also when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition. यहाँ पे मैंने heat किया था CaCO3 को, तो that is why it was thermal, and again it is a decomposition reaction, that is why it is a thermal decomposition reaction. Some more examples of decomposition reaction are uh, basically silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. So basically when I keep silver chloride solution in sunlight, sunlight reacts with the silver chloride solution and it forms silver and chlorine. It separate out silver and chlorine. So this is also a decomposition reaction. Again, silver bromide also behaves the same way. When I keep silver bromide in sunlight, we get product as silver and bromine. Okay. Also, you must remember that these both reactions are used in black and white photography. ठीक है? I hope this is clear. Also, one more thing that you need to remember is that reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. So you saw that here the energy was absorbed, heat was absorbed, na? In some reactions mein, when I used this heat, heat was absorbed in these reactions. So these all reactions are called endothermic. Exothermic, heat is released. Exo released, endo absorbed. Exo released, endo absorbed. ठीक है? Clear. Next up, we have displacement reaction. Displacement reaction. Okay, displacement. कुछ समझा, कुछ नहीं. Okay. Displacement is something कि मैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ. रिप्लेस तो उसने भी किया, हाँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट. सो if I say Fe, iron, if I take put iron in copper sulfate solution, I get iron sulfate plus copper. ओ समझ रहे हो, याद देखो. ब्लू इधर देख. मेरे पास पहले Fe अलग था, कॉपर सल्फेट के साथ सोल्यूशन बनाओ, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था. When I put Fe in copper sulfate of copper sulfate solution, I get iron sulfate plus copper alexis. So you can see that the copper in the copper sulfate solution was replaced by iron and it formed iron sulfate solution. So basically, one element displaces the other element. Why this happens is because of the priority order that you will learn in class 11th. That is, in this standard, you do not need to learn it. So basically, iron has displaced or removed other element, that is copper, from the copper sulfate solution. This is reaction is called a displacement reaction. Other examples are Zn plus Cu SO4 gives Zn SO4 plus Cu. Again, zinc replaced copper, ठीक है. And also we have for lead plus copper chloride gives lead chloride plus copper. Copper बहुत डिस्प्लेस हो रहा है बेचारा. ठीक है, कोई ना, क्या करे. अभी कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है जिंक और लीड, तो भी क्या कर सकते हैं ना, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं. बेसिकली वो ताकतवर है उससे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज व्हेन वी पुट, for example, in double displacement reaction, exchange of ions takes place. Takes place. So basically, when we react sodium sulfate solution with barium chloride, we get barium sulfate plus sodium chloride. You may notice that पहले यहाँ पे सल्फेट के सोल्यूशन में सोडियम था, अभी प्रोडक्ट में सल्फेट के सोल्यूशन के साथ बेरियम आ चुका है. यहाँ पे क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ बेरियम था और यहाँ पे सोडियम आ चुका है. बेसिकली
एक्सचेंज हो रहा है कि यहाँ रिएक्टेंट साइड पे जो थे वो उल्टा हो जा रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे। Na पहले सल्फेट के साथ था, यहाँ जाके वो क्लोरीन के साथ चला गया। बेरियम यहाँ पे क्लोराइड के साथ था, वो वहां जाके सल्फेट के साथ हो गया। This happens because of the exchange of ions. Basically, in this particular case, ions are exchanged. मतलब जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है ना वो चेंज हो रहा है, Ba2+। ये एक्सचेंज हो गया सिर्फ। SO4 2- चला गया Ba2+ के पास, और Na2+ चला गया Cl- के पास। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। So also, हाँ, so basically the white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO2 4- and Ba2+। So ये दोनों साथ में आगे, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस है, मिक्स हो जाता है। ये 11th में तुम सीखोगे। दैट इज द बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, एंड बेरियम सल्फेट इज अ वाइट पाउडर फॉर योर इंफॉर्मेशन। This type, when an insoluble substance is formed, basically a powder or something like that is formed, it is known as precipitate, and that is why the reactions in which precipitate is formed, these types of reactions are called as precipitation reaction, because precipitate is formed in this example particularly. Okay, so this example has this type of reaction has only one example, so go through it, I guess, and I hope this is clear. Okay, moving to the next part, we have oxidation and reduction. Ooh, ठीक है, example लेते हैं ना सीधा। We had copper, we mixed it with oxygen, heated it, and copper oxide was formed. ठीक है, okay, clear है। If hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and the copper is obtained. अभी अगर मेरा कॉपर ऑक्साइड पे वापस में हाइड्रोजन डालूं तो मुझे कॉपर प्लस मिलेगा, बस हाइड्रोजन मिलेगा। Okay, so what is oxidation and what is reduction? So basically, uh, whenever oxygen is gained or hydrogen is reduced in a chemical reaction, we say that oxidation has happened. Oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen. Again, oxidation is addition of oxygen and removal of hydrogen. And reduction is vice versa. Removal of oxygen and addition of hydrogen. Any one of them, right? दोनों में से एक भी हुआ तो भी चलेगा। ठीक है। So then what are redox reactions? So basically the reactions in which oxidation and reduction happens both simultaneously. These reactions are called as redox are called as redox reaction। ठीक है, तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल गया, इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो दिस वाज ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया मतलब ये हो गया रिडक्शन। व्हाट वाज रिडक्शन? इधर हाइड्रोजन विल बी एडेड और ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐड हो ही रहा है, ठीक है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट में से रिमूव हो रहा है, तो CuO was reduced, and यहाँ पे Cu was oxidized because it gains oxygen। So you can read that if a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. Okay. One more example. Okay. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. ठीक है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था पहले और बाद में वो कॉपर बना, तो कॉपर ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड, राइट? ठीक है। अभी हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन पहले बेचारा अकेला था, सिंगल था। फिर मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, दैट इज उसमें आया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बना वाटर, H2O बना, देन ऑक्सीजन तो मिल गया इसको, अरे वाह। पहले इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो वो रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीडाइज हो गया। सो समझ रहे हो, दिस इज व्हाट इट कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो मोर एग्जांपल्स है ZnO plus C gives Zn plus CO। सो बेसिकली ZnO का यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, ठीक है, एंड कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। MnO2+4 HCl gives MnCl2+2H2O plus Cl2। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। गुड, क्लियर, ग्रेट। अभी from the above examples also we can say that when the substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। ऑक्सीजन गेन करो या ना करो, अगर हाइड्रोजन रिड्यूस कर दिया तो वो ऑक्सीडेशन है। एंड इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन अगर हार गए और हाइड्रोजन गेन कर लिया तो रिडक्शन है।
क्लियर है? सो बेसिकली टू समराइज, ऑक्सीजन चला गया या हाइड्रोजन मिल गया, देन इट इज रिडक्शन। इफ ऑक्सीजन मिल गया या हाइड्रोजन चला गया, देन इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, cool। अभी ना ऑक्सीडेशन का थोड़ा दिक्कत भी है इन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीजन हैज गॉट सम ऑफ द ड्रॉबैक्स आल्सो। वी नीड टू लर्न टू ऑफ देम, दैट इज करोजन एंड रैंसिडिटी। ठीक है, व्हाट इज करोजन? ओके, whenever an iron bar or some some sort of iron is exposed to humid weather, when it is exposed to sunlight, water, moisture, air, then it gets some reddish type of brown powder on it, and that is called as rust of iron. That is the rust. Basically हम कहते हैं ना कि जंग लगना, गंज लागने, so that is what is known as rusting of iron. And the rusting of iron is the rusting of iron happens due to oxidation, because the iron is oxidized, because of बाहर air में, पानी में, सब तरफ oxygen है, उसको oxygen मिलता है, and the iron is oxidized and it forms the reddish brown powder. That is why we use color coating on metals. Also we use zinc, that the process is called as galvanization. ठीक है, this was just for additional information। ठीक है, ऑल्सो सिर्फ आयन ही रस्ट होता है क्या? नो, कॉपर एंड सिल्वर भी रस्ट होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड अ करोजन। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर सम एग्जांपल्स ऑफ करोजन। सिल्वर को भी थोड़ा ऑक्सीडाइज होने दो, बराबर ब्लैक कोटिंग आता है उसके ऊपर, सो दैट इज ऑल्सो करोजन। कॉपर पे ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है, दैट इज ऑल्सो करोजन। आयरन पे रेड कोटिंग कर और रेड कोटिंग चढ़ जाता है, दैट इज ऑल्सो करोजन। करोजन का दिक्कत क्या है? करोजन causes damage to metal parts, and also it it makes the part weak। अभी अगर मेरा आयन रस्ट होते जा रहा है, तो वो ब्रिटल होते जाता है अंदर से, उसका स्ट्रेंथ वहां से खत्म हो जाता है, एंड दैट कुड ब्रेक फ्रॉम देयर। ठीक है, सो इट इज वेरी डेंजरस कि अगर तुम लोग का मेटल का ब्रिज है और मेटल के ब्रिज के जो मेन पिलर्स है, दैट हैज गॉट ट्रस्ट ऑन इट, सो इट मे ब्रेक एनी टाइम एंड इट कुड कॉज सम disaster, right? So that is why we need to spend enormous amount of money on replacing the damaged iron, or uh, to conserve the iron from rusting। ठीक है, so that is what about all about corrosion। ठीक है, I hope this is clear। Then we have rancidity। Many times you have felt that when you keep a packet of chips open for a long time, it tastes bad, or it smells bad। So what happens is, the fats and oils, basically chips है, chips तो तले हुए हैं तेल में, उसको गरम फ्राई किया हुआ है, so the fats and oils on the chips are getting oxidized and they become rancid, and their smell and taste changes। तो वो rancid हो जाते हैं, that is खराब हो जाते हैं। ठीक है, so that is why usually substances, no, which prevent oxidation, that are called as, okay, हाँ, the substances that prevent oxidation are called antioxidants, are added to food containing fats and oil। कोई भी फैट कंटेनिंग, ऑयल कंटेनिंग अचार ले लो, कोई भी ऐसे फूड्स को हम एक तो एयर टाइट एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं, प्लस ऑल्सो वी फ्लश देम विद द एंटी ऑक्सीडेंट्स। मैं हैव नोटिस दैट तुम्हारे चिप्स के पैकेट ना ऐसे फूले फूले रहते हैं, ऑल्दो उनमें उतना चिप्स रहता नहीं है। सो दैट एयर इज नाइट्रोजन, दैट इज नॉट नॉर्मल air, that is the nitrogen, because chips, the bags of chips are flushed with nitrogen gas to prevent them from getting oxidized। I hope rancidity is also clear. So far in this chapter, we have discussed all the concepts, all the things. We'll just quickly summarize it, that what are chemical reactions, how do you represent them, what are reactants, what are products, what are their physical properties. Then we saw that how to balance the chemical equation, how to check whether a chemical reaction equation is balanced or not, is it unbalanced, and if it is unbalanced, how to balance it। Then we saw that types of reaction. First was combination reaction, when two or more substances combine to form a single substance. Then we had decomposition reaction, that is one reactant decomposes into two or more substances or two or more products। Then we had
We saw exothermic reactions. Basically, the reactions in which heat is released is called as exothermic reaction. Then we saw endothermic reaction. In the reactions in which heat is absorbed as are called as endothermic reaction. Then we saw displacement reaction when one element displaces the another element and form its compound from its compound and forms another compound. This is called a displacement reaction. Basically, higher reactive element, more reactive element displaces the less reactive element. Then we saw the double displacement reaction in which two different atoms or groups of atoms are exchanged. Two मतलब displacement में सिर्फ one था, in double displacement, two different atoms, a group of atoms that is also called as ions, are exchanged. Okay, then we saw precipitation reactions produce insoluble salts. So basically, in which the reactions in which there are insoluble salts that do not dissolve, some forms of powder, something like that, are called as precipitate, and these types of reactions are called as precipitation reactions. Then we saw that what is oxidation, what is reduction. Oxidation, when a reaction when we gain or lose hydrogen, we oxidation takes place, and when we lose oxygen or gain hydrogen, reduction takes place. Then we saw corrosion, then we saw rancidity. We also saw the measures to prevent corrosion and rancidity. Okay. I think that's all from my side, and I hope you have understood all the concepts, all the chemical equations, all the theory. I would suggest you to read this chapter twice and learn all the chemical reaction. Practice balancing the chemical reaction. You can just go on Google and ask Google to give you some examples to balance the equations. Right. Okay. All right. I think we are done with this chapter. I hope this is understood. If you have any doubts, feel free to put it in the comment section. I would definitely love to clarify them, and I'll try my best to clarify them. Also, if you have any feedback, you can put it in the comment section. I would definitely incorporate those things into my teaching and try to make myself better. Thank you so much for watching this video. Do not forget to subscribe to the channel for more such videos. That's all from my side. Thank you. Bye bye and take care. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।